Picture this. You're sitting in a job interview. The manager asks, "Have you ever worked in a team before?" And suddenly, you freeze. क्या बोलूं? I have worked. अब अगर यहाँ गलती हुई, तो जॉब मिलना मुश्किल हो सकता है. But no stress, because today, I'm here to make sure you never face this confusion again. आज हम सीखेंगे present perfect tense, your secret weapon to sounding professional, confident, and fluent in English. Bonus point. This tense makes you sound super impressive. तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं. Point 1. What is the present perfect tense? Present perfect tense का काम है past actions को present के साथ connect करना. Simple example. I have finished my homework. This means homework तो past में खत्म हो गया है, but अब तक इसका effect चल रहा है. It's like saying, देखो, काम तो कर लिया है. Key uses. To describe experiences. I have visited Jaipur. आप जयपुर गए हो, but कब गए हो, उसकी जरूरत नहीं है. To talk about recent actions. He has just left. To emphasize results. She has completed the project. अब एक सवाल. क्या आपने कभी ग्रामर को सीरियसली लिया है? नहीं? तो शायद अब समय आ गया है. अब समझ गई कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? चलो इसका फॉर्मूला देखते हैं. Point 2. The formula for present perfect tense. Voiceover. The formula is simple. Subject plus has have plus past participle V3. Examples. I have eaten breakfast. Use have for I, you, we, they. He has eaten breakfast. Use has for he, she, it. बस याद रखो, V3 is the past participle form of the verb. For example, eat eaten, go gone, write written. Pro tip, अगर V3 forms याद नहीं हो रहे, तो एक काम करो, डिक्शनरी के साथ चाय पे बैठो. ग्रामर और चाय दोनों इम्प्रूव हो जाएंगे. फॉर्मूला क्लियर है. अब बात करते हैं कब उसे करना है और कब नहीं. Point 3. When to use present perfect tense. Present perfect is perfect for unspecified time actions. I have read this book. कब पढ़ा? जरूरत नहीं बताने की. Recent events. She has arrived. Life experiences. We have lived in Delhi. Did you know? Present perfect tense is called perfect because it perfectly completes an idea. मतलब, boss level tense है. Use तो समझ लिया. But mistakes avoid कैसे करें? Let's talk about that. Point 4. Tips to avoid common mistakes. ये है common mistakes जो आपको avoid करनी है. Using past time markers. Don't say, I have met him yesterday. Correct, I met him yesterday. Mixing past simple and present perfect. Past simple, specific time. I went to Goa last year. Present perfect, unspecified time. I have been to Goa. Forgetting has have rules. Remember, has for he, she, it. Have for I, you, we, they. Quick quiz. What's correct? I has eaten or I have eaten? Comment below. And now, let's level up with some pro tips. Point 5. Pro tips for mastering present perfect. Here's how to master this tense. Practice with daily activities. Say sentences like, I have taken my medicine. Listen to native speakers. Watch English shows or podcasts. Notice how often they use present perfect. Use apps or tools. Apps like Duolingo or Grammarly can make practice easy. Secret बताओ?
मैं भी इंग्लिश मूवीज देखकर टेंस समझता था। तो अगर आपको बिंज वॉच करना पसंद है, गो फॉर इट। अब तो प्रेजेंट परफेक्ट आपका दोस्त बन गया होगा। लेट्स एक्सप्लोर क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स नेक्स्ट। पॉइंट 6, questions and negatives in present perfect. Voiceover. For questions, the formula is has have plus subject plus V3. Examples. Have you completed the task? Has she ever visited Mumbai? For negatives, add not after has have. I have not finished my lunch. He has not called yet. Pro tip. अगर कभी इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट हो जाए तो बोलो यू हैव नॉट लिसन टू मी। साउंड्स ड्रामेटिक, डजंट इट? अब चलो कुछ फन एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं। पॉइंट 7, फन एग्जाम्पल्स टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस दीज एग्जाम्पल्स फॉर फ्लुएंसी। I have binge watched Netflix shows all night. She has ordered pizza 5 times this week. They have never missed a cricket match. We have celebrated every festival with excitement. He has visited the Taj Mahal twice. देखा? Practice के साथ English conversation mastered हो जाएगा. But wait, what if you need to talk about actions that started in the past and are still happening? तब क्या करोगे? Act 3, the resolution, wrapping up. तो बस प्रेजेंट परफेक्ट का फुल गाइड अब आपके पास है। बट अगर आपको बात करनी हो अबाउट एक्शंस जो पास्ट में स्टार्ट हुई और अब तक चल रही है, दैट्स वेयर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कम्स इन। क्यूरियस? क्लिक ऑन द एंड स्क्रीन टू वॉच माई वीडियो ऑन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। Your support helps me bring more helpful content. Till then, keep practicing, keep shining और इंग्लिश में कॉन्फिडेंट फील करो।